आप सभी को अंजलि का नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? कुछ मेरे व्यूअर्स ने बोला कि हम जो है ना कोई डायबिटीज़ के ऊपर इस टॉपिक को कुछ डिस्कस करें। तो हमारे 60s विद अंजलि ने एक बहुत ही रिनाउंड मतलब डाइटिशियन है जिनको कि बहुत पुराना एक्सपीरियंस है, समझिए 30 से भी ज़्यादा ईयर्स का। तो हमने उनसे कांटेक्ट किया और वो अभी हम उनसे आपको मिलवाते हैं। तो वो अपने बारे में भी कुछ बताएंगी और डायबिटीज़ के ऊपर भी वो उनसे हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सो गाइस, लेट्स मीट रश्मा आनंद। तो उन्होंने बहुत जगह पे काम भी किया है, वो खुद ही खैर बताएंगी आपको। तो लेट्स गो एंड मीट हर। तो हाय रश्मा, वेलकम टू माय चैनल। रश्मा, मैंने अभी अपने व्यूअर्स को आपके बारे में बताया, यू बीइंग ए बिग डाइटिशियन। तो अब मैं चाहती हूँ कि आप खुद अपने बारे में कुछ मेरे व्यूअर्स को बताओ कि लाइक आपने कहाँ का काम किया और व्हाट ऑल द अचीवमेंट्स यू हैव डन। Yeah, thank you, Anjali. As you know, I'm a dietitian and I did my PG from Delhi University, Lady Evan College, and then interned from Safdarjung Hospital. Then after that, I started my career as helping the research diets in Maulana Azad Medical College. I joined in the Department of Medicine, and later on, I moved to LNJPN Hospital, where at that time the dietitians were few, so we had to do all, attend different various clinics, the nephrology, the gastroenterology clinic, the renal, the diabetic clinic, as well as we had to, because it was a huge hospital, we used to get referrals. I used to go to see patients in GB Pant Hospital, Guru Nanak Eye Center, as well as look after the IPD patients. IPD are the indoor patients who were admitted in the hospital. So that's how my career began. And after that, for a short while, I worked also in RPTB Hospital, Kingsway Camp, then Hindurao, and then that's how my journey began. And of course, now as in the pre-COVID, in the pre-COVID period, I used to work for a diabetic clinic in GK2. I used to go to a Surjit Vasu dispensary in Scenic Farm, then to the Heart Center, as well as Anahat Gurgaon as a visiting consultant. And of course, wherever I live. So it's a long journey now. Yeah, it is a long journey, and I love. It's been nice to be able to try to help people. Help my patients. Right. Okay. So Rashma, like you have said, आपने सब तरह की diets दी होंगी, but I think that is not possible in one day. Like talk about that. So I think today we'll talk on diabetes, which is a very common problem. Yeah. तो मतलब कुछ उस पे ना आज आप कुछ बताओ कि मतलब क्यों व्यूअर्स को कि क्या अभी डायबिटिक क्यों हो जाते हैं, किस टाइप की होती है, तो थोड़ा सा नॉलेज दीजिए आप इसके ऊपर थोड़ा सा। So diabetes is basically a lifestyle disease, but ऐसा है कि diabetes it's of 3-4 types of diabetes. एक आपकी होती है type 1 होती है जो छोटे बच्चों को भी हो जाती है, और people who are young, it happens because there's insufficient production of insulin, या जो glands हैं हमारे pancreas, which the beta cells of the pancreas जो है वो they are absent or they are less, a lot of problems. Then is the type 2 type of diabetes, which is the most common. And in that, what happens that is where it happens mostly in people who are after 45, post 45. They have those, they are obese, or they have got hypertension of, hyper cholesterol unka bada hota hai, and they have faulty eating habits, and they do very little exercise, so they are become more prone to it. Of course, it's genetic too. And then the third type, which is also common, is gestational diabetes. वो होती है जब when the women are, it happens during pregnancy. Okay. Yeah. It happens during pregnancy when there's insufficient, utilization of the sugar in the body, and then, but by proper care and advice, it is controlled, and it does not continue at the lifetime.
after Okay, okay, after the pregnancy as well. okay, Yes. So senile okay. diabetes is So also, sometimes diabetes happens even for people who are senior citizen, old, because their glands don't function properly. So yeah, these are the few reasons why, these are few types yeah. of diabetes. Yeah. Yeah. Oh, so what advice will you give like on the diet कि कैसी डाइट होनी चाहिए मतलब इसमें कैसे खाना क्या अब क्या लेना अब चाहिए? हाँ, देखिए, ऐसा है कि ऐसी कंडीशन में, क्योंकि से हमारी तुम्हारी द रीजन व्हाट आई सेड वाज हमारी there's poor utilization of glucose in the body. So उस केस में Yeah, हमें क्या करना, the first step of course is we should avoid sugars, simple sugars, and be very right. careful of the carbohydrates we eating. आलू है, अरबी, शकरकंदी, जिमीकंद, कचालू, ये नहीं लेना है. फ्रूट जूसेस नहीं लेने हैं. ये cola drinks नहीं लेनी है. So or aerated drinks we have to avoid, and we have to concentrate. We have to pay more attention to having good meals, lots of Mhm. fresh vegetables. The more color in the diet, the more vegetables, the more color in the diet, the better it is. Proteins, so Okay. that it takes care of us. So dals Mhm. खानी है, whole grain pulses लेने हैं, and good quality of oils as well. हाँ जी. Okay. तो कुछ मतलब वो बताएंगे कुछ जैसे उनके ब्रेकफास्ट लंच डिनर जो करते हैं हम उसमें मतलब कुछ थोड़ा गैप्स होने चाहिए या मतलब थोड़ा सा Yeah, उसमें डाइट yeah. पे थोड़ा फोकस करें? It किसी भी diabetic diet में the most important principle is that, number one, you should never miss a meal. If you miss a meal, then it will cause fluctuations. You may go into hypoglycemia, or upset your blood sugar. So the meals should not be missed. There should be proper spacing of meals. थोड़े आपने ओके 5-6 मील्स लेंगे, 3 मील्स आपके लंच हो गया, डिनर हो गया. Then a night time snack is also very important. And because the gap in the last meal and in the early breakfast is long, and you sleep, and so it has to be taken care of. Yeah. ओके अच्छा कई बार ऐसा होता है कि आई हैव सीन सम पीपल कि वो कहते हैं कि हम तो बड़े फिट भी दिखते हैं एंड जैसे हाँ. कि हम तो बिल्कुल कुछ नहीं खाते हैं वी टेक हेल्दी डाइट फिर भी उनकी जैसे है ना डाइट वो मतलब कंट्रोल नहीं रहती शुगर तो ऐसा क्यों होता हाँ. है मतलब? ये this is exactly what it is related to the question you asked me. अभी अभी आपने मेरे से पूछा है. I had a patient, हाँ मेरे पास diabetic patient था. He was very smart young boy, around हाँ 26, 27, engineering graduate from Singapore. And उसको क्या था, उसकी प्रॉब्लम क्या होती थी कि पूरा ही was so careful, यहाँ तक कि he had googled through all the diets. He knew exactly what was the glycemic index of the foods he was eating. High किसमें है, low किसमें है, कब लेना है, नहीं लेना है. He could actually monitor his diets. But हाँ he told me, I guess just get at some part of the day he used to get so hungry, and he used to binge eat, and then he used to you know he used to go just bizarre, and then हमको ये समझ आया. Then he came to me, and I studied his blood sugar levels at different times of the day, and then we came to know that he was not spacing his meals properly. At some time he was having extra carbohydrates, while at others he was having no carbohydrates, and that's why he used to get into that feeling of yeah hypoglycemia, and he used to feel like just eating anything he could pick up and eat. So we just managed his meals. What he was eating was right. He was eating good carbohydrates. He was having plenty of proteins. He was having plenty of water. He was doing exercise, but his meals were not spaced properly, and he used to miss meals at sometimes. So, so राइट this तो once this was rectified, so या yeah, once this was इट मींस जो rectified, everything was taken care of. So, लाइक Hanji? राइट यही है Yeah. कि मतलब हमको प्रोटीन कार्ब्स सब प्रॉपर वो लेने होते हैं कि भी हाँ. ताकि उनके डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर रहे हाँ. बॉडी में. हाँ. क्योंकि से हर 3 मील्स में सबसे जरूरी ये है कि उसमें आपके देर शुड भी आपकी प्लेट में देर शुड बी कार्ब्स आल्सो. रोटी भी हो, आपके दाल भी हो, आपकी सब्जी भी हो, एंड सैलेड होगा. प्रॉपर ये नहीं कि आपने दाल खा ली, या आपने खाली सिर्फ सब्जी खा ली, या खाली आपने रोटी खा ली. अगर आपने रोटी ली है तो रोटी में आप अपने सब्जी डाल के खाइए, तो वो दैट विल टेक केयर ऑफ दैट. The soup ले लिए. तो every meal should be complete for it to work well for in your diet. अच्छा कई बार होता है कि जैसे थोड़ा ये भी बताओ कि मतलब क्या शुगर लेवल्स होते हैं कि जो विच आर करेक्ट. कई बार वो कहते हैं कि 3 का करवाओ
वो बेटर है, कई बार मॉर्निंग में करते रहो, डेली करो, इज इट ओके टू डू दैट? नहीं, इट्स नॉट आई वुड एडवाइज, यू नो, अब शुगर जो है अभी अब शुगर टेस्टिंग भी है, अगर आप कराते हैं तो आजकल HbA है एवरेज जो लेते हैं, which is you know which gives you three monthly average, but that's not very accurate. It'll just give you an idea. But the old method of fasting in PP works best. But as well as if you want to take care, you know, in certain cases where there's a lot of fluctuations, patients are on insulin, you know, they're taking various medicines, and they want to monitor their blood sugar at different times of the day to be able to assess where they are going wrong. Then a glucometer is suggested. Once they should be using a glucometer during pregnancy, they used to be, you know, but or they're on multiple insulin injections. Then in that case, so that the doctor and the dietitian can help them out, so to see what time they're having physical activity, and where the blood sugar is fluctuating. So these days you even get patches, you know, when they put a patch on your arm, and then that will also tell you about how much of you know, you have ingested, and to study your this ओके blood ओके। sugar. तो Yeah. क्या ये होता है जो हम घर पे रखते हैं, ये क्या हाँ, ठीक देता है, मतलब एसिडिटी होती है क्या इसमें? देखिए, जो घर में है ये ठीक है। मैंने जैसे आपको बताया कि दो तीन जिसकी जब बहुत हाई होती है या फ्लक्चुएट करी, उस केस में तो ये ठीक है। पर बार बार ब्लड शुगर लेना ठीक नहीं है। अब कई बार उसमें गलती भी हो जाती है। यू नो, आई हैड अ पेशेंट जो है, उनको वैसे ही लगा जैसे आपकी होती है, आपको आपका ब्लड शुगर बढ़ जाता है तो आपको कभी घबराहट होती है। उनको हेडेक शुरू हुआ, शी वाज एन ओल्ड लेडी, उनको हेडेक शुरू हो गया, उनको थर्स्ट, शी वाज फीलिंग वेरी थर्स्टी, यू नो, नॉर्मल सिम्टम्स जो अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको मालूम है। पर उन्होंने अपना जो है अपना शी ट्राइड टू टेस्ट हर ब्लड शुगर एट होम। उन्होंने टेस्ट किया, एंड देन शी कॉल्ड मी अप, इट वाज अराउंड 11 o'clock एट नाइट। नहीं रश्मा, मेरा जो है मेरा ब्लड शुगर जो है बहुत बढ़ गया है, व्हाट टू डू, यू नो। सॉरी, बड़ा नहीं, आई एम सो सॉरी, उनका घटा था, आई एम सो सॉरी। कम हो गया? सो आई या उनका घटा था, तो मतलब वो कह रहे कि मेरे शुगर जो है बिलो 70 जा रहा है, व्हाट शुड आई डू। तो उन्होंने जो है, एक तो उन्होंने गलती करी, उनके पास मीठा नहीं था। उन्होंने किसी को अरेंज किया, उन्होंने सॉरी क्या हनी ली, शुगर ली, कैंडीज ली, उन्होंने रूह अफ़ज़ा का शरबत लिया, यू नो। सो शी लॉट ऑफ थिंग्स शी स्टार्टेड टेकिंग कि मुझे नहीं। देन शी सेड मैं ठीक तो हूँ, पर मेरे को नहीं समझ आ रहा। अर्ली मॉर्निंग शी गॉट अप अगेन, शी टेस्टेड, एंड शी सेड लो। एंड व्हेन शी टेस्टेड, व्हेन आई सेड आप अपनी स्ट्रिप चेक करो कब की है, एंड वी टेस्टेड, उनकी उसकी स्ट्रिप की एक्सपायर्ड थी। सो यू हैव टू बी केयरफुल, ओके। यू नो, देयर आर सर्टेन थिंग्स कि वो या आपकी या या yeah, so these are ओ, small things. But if your sugar does go down, उनका नहीं था, या पर अगर कभी जाता है, तो what is most important is, सबसे पहले काम आप करिए, you take at least, you know, 2-3 tablespoons of शुगर है, ग्लूकोज है, आप लीजिए। 15 मिनट के बाद फिर चेक करिए। फिर उसके बाद ओके। आपका फर्क अगर वंस स्टार्ट गोइंग अप, फिर उसके बाद जैम है, जेली है, एनीथिंग विच इज रिच इन शुगर, यू नो, आप वो या इमीडिएटली, और जो इमीडिएटली जो आपके जिसका हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो आप लीजिए। और उसके बाद अगर आपके आधे घंटे का घंटे बाद आपका लेने के बाद भी फिर आप चेक करिए, अगर आपकी शुगर नहीं होती है, देन यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर। बट if ओके। your blood sugar is high, then immediately you should call your doctor to consult him, whether you do not increase your medicine or your insulin on your own. Call up a dietitian. ये नहीं है, actually we can help. I had a patient अभी सीरियस, जब भी कोविड पीरियड में I had a patient, you know, and उनका ब्लड शुगर जो है काफी हाई हो रहा था, he was losing weight as well, and he asked me कि मैं क्या करूं, I don't want to increase my medicine, I can't go to the doctor because मुझे प्रॉब्लम हो रही है, एंड मैं अब कैसे करूं मैं, कि मतलब हाउ शुड आई गो अबाउट, क्योंकि से मैं नहीं जाना चाहता, आई एम अ सीनियर सिटीजन एंड आई एम एट एन एज व्हेन आई कैन गेट इन्फेक्टेड। So then I told him, I took his dietary history, I explained to him, and then I decided him, I realized that he was not doing any activity. So many ओके। with activity and diet, he was an adult, and I was in activity and diet. I suggested he improved, and from 210/20, it came down to 110, 115, 117 in this 1 month. So that means we can control with that, but with consultation with the doctor as well. So both of us इट मीन consulted with the. exercise is also a must, Yes, like we should. exercise, activity. Some activity is important. You know, it's not that if you have your food and you just go down and lie down. No,
Rest for 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 15 minutes, but after that, at least, even if you can do, you need not do, you're not expected to go on a jog, or to go for a run, or on the rush to the treadmill, or do vigorous exercise. Just divide your half an hour of the day into 10 minutes, so just do it for a simple 10 minutes. If you cannot do more than that, so do it for 10 minutes, rest, and then you can do it for 10 minutes, maybe after 1 hour again. So that's important. Yeah. ओके ओके रश्मा, क्या मतलब डाइट तो ठीक है, अब आपने बताई दी है नॉर्मल डाइट, और मेडिसिन भी हमको लेने की जरूरत, क्या कुछ और भी है, कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो हम लें तो थोड़ा हमारा मतलब इसमें हमें हेल्दी रहें और डायबिटिक्स ठीक रहें हम इससे? अंजलि, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। 2-3 चीजें हैं जो हम सोचते हैं कि बहुत अच्छी हैं, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल नो इट एज वेल, पर इसमें जरूरी है कि आपको अपनी क्वांटिटी, कोई भी चीज अगर आपको अपन बोलते हैं ना कि आप ये कम लीजिए, ज्यादा लीजिए, इसका मतलब नहीं है कि हम कम चीज को जितना मर्जी लें। अगर हम जब जितना मर्जी लेते हैं तो वो ज्यादा हो जाती है, विच इज ऑल्सो हार्मफुल. This is ओके a very important point to keep in mind. And the other 3 superfoods which we can suggest for diabetes is, of course, dalchini lijiye, cinnamon lijiye. That is very good. Then Karela is very good. It helps in your, it inhibits the enzymes which which are responsible for the uptake of your sugar. Then उसके साथ ही आप दालचीनी है, करेला है, फिर इसके बाद मेथी सीड्स है. मेथी is also supposed to be fenugreek seeds, which we say they're very good. So वो भी थोड़ा बहुत हमको ले लेना चाहिए, so ओके but not everything together, just sometimes. यार, हाँ, जैसे वो कहते हैं मेथी दाना, उसको रात को भिगो के उसका सुबह पानी ले लो, या करेले हाँ को हाँ किसी फॉर्म में लो, मतलब हाँ किसी भी हाँ, फॉर्म में। किसी फॉर्म में ले सकते हैं. फ्राई करके नहीं लेना है, ऑयल्स का ध्यान रखना है, आपका ऑयल्स का ध्यान रखना है, हेल्दी ऑयल्स लीजिए. ऑलिव ऑयल राइट है, मस्टर्ड है, कोकोनट है, और तेल बदल बदल के लीजिए, पर क्वांटिटी मार्क, be careful with the या quantity. Do not increase your quantity, because we do not want you to increase your weight. Because अगर आपका डायबिटीज, आपका ब्लड शुगर बढ़ गया, तो उसके साथ आपकी जो है रेटिनोनेफ्रोपैथी होती है, आपकी आंखों में असर करेगा, आपको न्यूरोपैथी है, नर्व्स में है, आपको टिंगलिंग सेंसेशन होगी, काफी कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो जाते हैं इसके साथ. सो वी हैव टू ओके बी, एग्स अगर खाने हैं, एग वाइट लीजिए, so that you do not take too much of, be careful of the saturated fats which you take. Just be ओके। careful. तो रश्मा, बहुत कुछ आपने बता दिया। अब आई थिंक अगर कोई बहुत ही डिटेल में फिर जानना चाहता है तो उसको आपसे कांटेक्ट करें, और फिर वो आपसे कंसल्ट करें, और आप फिर उनको डाइट बताएं। तो आपका नंबर मैं लोगों को जरूर पहुंचाऊंगी, Thank तो you. वो आपसे फिर व्हाट्सएप पे बात कर लेंगे, एंड दे हाँ कैन जी. कांटेक्ट। तो फिर आपसे वो अपने आप डाइट जो भी उन्होंने लेनी होगी वो आपसे कंसल्ट कर फिर वो कर हाँ. देंगे। तो रियली 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 थैंक यू, आपने बहुत ही अच्छी टिप्स दी व्यूअर्स को, बहुत ही आई थिंक बहुत ही फायदा हुआ होगा। तो गाइस, Thank you so much. Thank you so much. ओके, It was my pleasure as well. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. And बहुत ही take care, be safe during this COVID period. श्योर श्योर श्योर। सो मेरे व्यूअर्स अब कभी भी आपसे मिलना चाहेंगे या बात करना, जरूर जरूर, they are most welcome. Yeah. I'll give them your WhatsApp number and they can contact you. Okay, see you Yeah. then. Yeah. Bye. Thank you. Bye Thank bye. you. सो गाइज, आई होप आपको रश्मा ने जो जो टिप्स दिए काफ़ी पसंद आए होंगे। आज का बस हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, और होप कि अगली बार हम जो है कुछ और नया लेकर आएंगे। एंड प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, अब मिलते रहेंगे और आपस में बात करते रहेंगे। नमस्कार।